Positions, the symbol of spirit of the snow warrior, conveying the message that they are the sentinels of the Himalayas. Constable Dharmendra, Ashok Kumar and Vivek Khokar. All eyes now focusing on Rashtrapati Bhavan, from where we will have the flypast by 75 aircraft of the Indian Air Force and the Indian Navy participating in that grand show. So we saw perfect balance, total concentration and absolute discipline here on the ground. It's a windy day, so the wind definitely plays a role in getting the balance right. And we now move from these beautiful moves to eyes in the sky from the direction of Rashtrapati Bhavan. The first formation going past the saluting base, Rahat, comprising 5 ALH aircraft in arrowhead formation, led by Wing Commander H.S. Chima, Wing Commander G.D.K. Reddy, Wing Commander S. Jamkas, and Wing Commander J. Rathore, Wing Commander Nenwa. और अब कुछ ही देर में सलामी मंच के ऊपर होगी मेघना फॉर्मेशन। ग्रुप कैप्टन मनीष गुहा, जो चिनूक को उड़ा रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। अन्य पायलट मी-17 को उड़ा रहे हैं विंग कमांडर एन मेहरोत्रा, विंग कमांडर गोपी कृष्णन, स्क्वाड्रन लीडर मोहित और स्क्वाड्रन लीडर पी.एन. रेड्डी। Special provision has been made to give you aerial shots too. So normally we take a look at the flypast from ground upwards, and here you're getting a view what the pilots actually see when they look down. अद्भुत दृश्य, सही मायनों में विहंगम दृश्य जिसे हम कहते हैं, वो देखने को मिले। और इसके बाद तिरंगा फॉर्मेशन, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं विंग कमांडर गिरीश कुमार और अन्य पायलट विंग कमांडर वाई श्रीधर, स्क्वाड्रन लीडर वीर कुमार, स्क्वाड्रन लीडर चंदन पटनायक और विंग कमांडर गोपी कृष्णा। इस फॉर्मेशन में 5 सारंग ALH लैडर फॉर्मेशन में तिरंगा फहराते हुए दिखेंगे। Coming in the direction of saluting base, we have the Tiranga formation, led by Wing Commander Girish Kumar, Wing Commander Y. Sridhar, Squadron Leader Veer Kumar, Squadron Leader Chandan Patnaik, and Wing Commander Gopi Krishna, all participating in this formation. Here you can see what the pilots are seeing. A bird's eye view, an aerial view, an eye in the sky. The Tiranga going past the saluting base. आमतौर पर हम कहते हैं विहंगम दृश्य, जो कि पक्षी की आंख से दिखाई देता है। यहाँ वायुयानों की आंखों से जो दिखाई दे रहा है, वो दृश्य हम देख रहे हैं। और अब एकलव्य फॉर्मेशन, नेतृत्व ग्रुप कैप्टन राजशेखर रेड्डी कर रहे हैं। एक Mi-35 की अगुवाई और पीछे 4 अपाचे हेलीकॉप्टर्स 5 एरोहेड फॉर्मेशन में उड़ान भर रहे हैं। ग्रुप कैप्टन क्षितिज अवस्थी, ग्रुप कैप्टन विजय राघवन, विंग कमांडर C.K. राव, विंग कमांडर G. पठानिया, अन्य पायलट। Traditionally, flypasts also serve as an aerial salute. They show respect, display aircraft, and showcase flying skills and delight the public. And now we look forward to Dungale. This formation comprising 1 Dakota aircraft in the lead with 2 Dornier aircraft in echelon flying in WIC formation will fly past at a height of 300 meters over the water channel north of Rajpath. The Dakota is being flown by Wing Commander S.S. Gehlot, the Dorniers by Wing Commander Shubham Mishra and Wing Commander Abhishek.
we're all in for a very spectacular aerial display. With cameras specially positioned, views never been seen before. Taking you up to the heights, they go, touching the sky with glory. The visuals giving you a feel of chill in the air, which we're all experiencing here down on the ground. और अब त्राण फॉर्मेशन, इसमें आगे एक C-17 और पीछे 2C-130 400 मीटर की ऊंचाई पर राजपथ के उत्तर में वाटर चैनल के ऊपर से निकल रहे हैं। नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन रविनंद और दूसरे पायलट्स हैं विंग कमांडर राहुल रावत, विंग कमांडर हरिओम दुबे। The clear blue skies today, perfect weather for a perfect fly past. And for these men in blue of the Indian Air Force, the blue sky seems to be just an extension of them as they take wing and vanish into the blue. We now look forward to the next formation. This is the Nitra formation. Group Captain Pranjal Singh with Squadron Leader Rahul Yadav. The Su-30's Group Captain Arpit Khanna with Squadron Leader Aditya Sinha. Wing Commander Varun Bhoj with Flight Lieutenant Abhishek Bhandari. And the MiG-29's Group Captain K.D. Singh. Wing Commander Amol Sudhir Kelkar. ये विमान विभिन्न शहरों से उड़ान भरते हैं, अनुशासन, समन्वय और सटीकता से अपनी अपनी उड़ान को अंजाम देते हैं। So slowly as the fly past progresses, speeds will increase, heights will increase, and our pulse rate too. और अब वरुण फॉर्मेशन, नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन नामबियाद सुदीप। इस फॉर्मेशन में एक P-81 विमान और पीछे दो MiG-29 विमान विग फॉर्मेशन में उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। अन्य पायलट हैं MiG-29 के कैप्टन S.S. सांब्याल और विंग कमांडर C.V. भट्ट। Excitement galore at the Republic Day Parade right now. Speed, pulse racing, daring, and of course there is precision. Beautiful visuals from our cameras, giving you an actual feel of what the fly past entails. Now we have Vinash approaching the saluting base, comprising 5 Rafale aircraft, arrowhead formation, 300 meters at the height of AOL, above obstruction level. पलक झपकते ही ये यहाँ से ओझल हो जाते हैं, लेकिन दूरदर्शन के कैमरा इनको दूर तक कैप्चर करते हैं। और अगली फॉर्मेशन के लिए अब आप तैयार हो जाइए। अगली फॉर्मेशन है बाज। इस फॉर्मेशन में एक रफाल, 2 जैगवार, 2 MiG-29 UPG, 2 सुखोई 30 MKI विमान 7 एरोहेड फॉर्मेशन में 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। नेतृत्व विंग कमांडर विक्रम कर रहे हैं। अन्य पायलट हैं जैगवार में ग्रुप कैप्टन एन अभिषेक और सैफ जैदी, MiG-29 ए रंजन और विंग कमांडर मुकेश, सुखोई में
विंग कमांडर करण डोगरा और विंग कमांडर ए.के. तिवारी, और ये आए बास फॉर्मेशन में। The bars formation going past. All eyes up in the sky. Heads turned skywards. Gaze searches for the glimmer of silver. A message goes out to the future. We see you and we're preparing to meet you. Specially recorded for you visuals. Here, after the buzz, we now look forward to the Trishul formation comprising 3 Su-30 MKI aircraft which will fly past in VIC formation at 900 kilometers per hour, maintaining 300 meters AOL over water channel north of Rajput. This formation will pull up and outward for the Trishul maneuver. Going higher up into the clouds and then peeling into 3 different directions. The Trishul formation under the command of Group Captain A. Dhankar. The other pilots, Group Captain Karan Deo and Wing Commander Gaurav Sharma. In the words of a pilot, the roar and the thunder can be actually felt in the pounding of your heart. As these visuals tell you, absolute concentration, absolute precision, flying from different places, all coordinated to perfection. And now we have the Vijay formation. 1 Rafale aircraft will be flying in at 900 kilometers per hour behind the Tiranga formation, maintaining 300 meters AOL. We'll execute 2.5 turns. Group Captain M. Jump in this aircraft, you can see carrying out the vertical Charlie. Touching the sky with glory. आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम, और आज़ादी के 75 वर्ष इसी वर्ष हम पूरे कर रहे हैं, और इसी उपलक्ष्य में अब अगली फॉर्मेशन है अमृत। इस फॉर्मेशन में 17 जैगवार विमान 75 की आकृति बनाते हुए सलामी मंच के ऊपर से गुजरेंगे। इस फॉर्मेशन की अगुवाई कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन अविनाश सिंह, ग्रुप कैप्टन गौरव अर्जारिया और विंग कमांडर संदीप जैन। अन्य पायलट हैं ग्रुप कैप्टन एन.पी. वर्मा, विंग कमांडर प्रखर, विंग कमांडर रोहित राय, विंग कमांडर सिद्धार्थ, विंग कमांडर अंकुश तोमर और विंग कमांडर पवार। What a splendid display it is. For the first time, we also have some naval colleagues of the Indian Armed Forces flying with their Air Force colleagues. The diffused glow of a chilly January morning, witnessing, along with all present, the reaffirmation of our national identity, a nation on the move, men and their machines, defining the sky space. This connect with the people, this walk down Rajpath is what makes the connections in democracy.